ताहिर बशारत चीमा साहब, इंजीनियर उपल साहब, इंजीनियर हबीब, जाहिद इब्राहिम और सारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो हम थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये इस मुसीबत की मारी कौम की फिक्र में वो सोच विचार की खातर हमने ये सोचा कि जो हमें ज्यादा इल्म रखते हैं, ज्यादा बाखबर लोग हैं, उनकी बात को सुना जाए और हमारे सुनने से बेहतर के जो अरबाब इख्तियार हैं वो कहीं हमारी बात को सुन लें। इस अर्ज को, जिसको पूरी कौम चीख चीख कर पुकार रही है कि हमें इस बिजली के इंतहाई महंगे टैरिफ से किस तरीके से निजात हुई, जो कि रोज बरोज महंगे से महंगा होता जा रहा है। अब तो बहुत सारे, आप गली मोहल्ले में भी जाकर किसी से पूछें तो उसको भी पता चल गया है कि आईपीपीज भी कुछ होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस मामले के करीब हैं उनको भी नहीं पता कि आईपीपीज के साथ किन शराइत के ऊपर मुआहदे होते हैं और क्या उसमें हमें जंजीरें डाली हुई हैं, किसने डाली हैं और उनका तोड़ क्या है। अगर ये जंजीरें वो कानूनी तौर पर जो हमारे पाँव में, हाथों में डाली गई हैं, अगर इसको नशर कर दिया जाए, आम कर दिया जाए, तो मुमकिन है कि कोई ना कोई हल निकल आएगा। ये 24-25 करोड़ ज़हीन लोग हैं। जब कोई इंसान तकलीफ में होता है तो अल्लाह ताला कोई ना कोई उसके जहन में उसका हल जो है वो अल्लाह ताला खुद नाजिल फरमा देते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो आज ताहिर बशारत चीमा हमें रोशनी डालेंगे जिस मामले पर, और आपका क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, तो मुमकिन है कि किसी बेहतर नतीजे की तरफ हमें कुछ रास्ता मिल जाए कि हमारी मुश्किलात का तो इल्म है, लेकिन आया इसका कोई हल है, किसने ये हल निकालना है और कैसे निकालना है और कब निकालना है। ये 3-4 सवाल हैं जो ताहिर बशारत चीमा साहब, जो कि बड़े साहिब अकल हैं, साहिब इल्म हैं और इस मामले के एक्सपर्ट हैं, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो तशरीफ लाएं और इस पर रोशनी डालें। थैंक यू ताहिर बशारत चीमा। थैंक यू मियाँ साहब। अब हम ज़्यादा लंबा तारफ वगैरह नहीं करते क्योंकि पहले आधा घंटा थोड़ी लेट हो गया। चीमा साहब समझ रहे 11:30, तो ऑनलाइन में काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो इंट्रोडक्शन मुझे कह रहे थे कराएं। चीमा साहब ऐसे आदमी हैं कि इंट्रोडक्शन की तो जरूरत ही नहीं, हर आदमी जानता है पाकिस्तान में। ये पहले एमडी पेप्को बने, जब भी टीवी खोलते थे चीमा साहब खड़े होते थे एमडी पेप्को के लिए। तो अब भी जब एमडी पेप्को की बात हो रही है तो मेरे जहन में वही होता है कि चीमा साहब आ रहे हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि चीमा साहब रिटायर हो गए, लेकिन जो इनकी कारकर्दगी थी वो मेरे किसी और में नहीं। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये ताहिर बशारत चीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम. Gentlemen, it is an honor for me to be here and trying to explain the quagmire which is power sector of Pakistan now. I must also congratulate the institution of engineers for grabbing more space out of its own property for academic discussions, etc. It is a great thing. Gentlemen, my recent book
on the power sector, which is named as the Pakistan Power Sector, an enigma which knows no solutions. That was underwritten by the Pakistan Institute of Developmental Economics, and a huge number has been distributed around the world. Imagine when the new minister took over, the caretaker minister for energy took over, the first thing he was ever presented was that book. But books, but books are just books. We need action. But before I take up the actual subject, I'll have to tell you a few things. First of all, let this be interactive. So whenever you wish to ask a question, it is no issue. I would happily answer that question, and it will probably be a better way to disseminate knowledge and to understand things. One. Secondly, there is always a background to things. And in the background we see, do we have the presentation? If we have it, if we could display there. Gentlemen, the first powerhouse utility size was set up in the United States of America in, next please, in 1880. Oh, that was 143 years ago. It is something old. It isn't a new industry. It isn't any new invention. And in 143 years, mankind should have been able to understand the intricacies of this issue, this sector, and should have also come up with the solutions. Unfortunately, it is an enigma. There is no silver bullet with us that we just fire that and we get the results. We kill the monster. It is not possible. Now, let's take a look at when the first transmission line was set up, right? It was in 1889, as you see over there. Next, please. The first demonstration of electric light in the subcontinent, it was Calcutta, was done in mid-1879, even before a utility-size power station was set up in the United States. That means we are senior to United States in comparison, because the first demonstration of electric light was taken up in Calcutta in 1879, right? And then a 4.5 megawatt hydro power station in Karnataka was set up. Subsequently, the machine was made by GE of US, and it was commissioned in 1902. That too is like nearly 122 years ago. Meaning thereby that nothing is old for us. Nothing is old for us. Everything is new. Gentlemen, the first time I went to the United States of America, now that was in 1984, as an invitee by the USG, the United States government, right? They thought that I had come from Africa. For them, for the Americans, anybody who is not an American is from Africa. That means you should know nothing. And they started talking about their laws, right? Because I was sitting with the regulator, the state regulator over there, the state NEPRA over there, right? It is known as the state utility regulator. And I told him that, gentlemen, please do not consider me as somebody who's uninitiated in electricity, right? Or in electricity utility operations. I told him that India's
first act which supported electricity operations was the Telegraph Act of 1885. Next, please. Next. The Telegraph Act, which allows electricity lines, including transmission lines, to traverse the countryside, was first enacted in 1885. This allows, public usage or utility lines to traverse and move forward. Right? And then we had the Electricity Act of 1910, Electricity Rules of 1937, and during Zia era, I was also a part of that. In 1979, it was updated, right? And subsequently, a few more updations also took place. But this is the kind of legislation which we have in the Indo-Pakistan. Next, please. Next. Gentlemen, in 1947, when Pakistan was created, the partition took place. West Pakistan's generation was exactly 60 megawatts in 1947. It included some hydro and some light diesel oil fired or coal-fired, coal-fueled plants in Pakistan. It was 60 megawatts. At the moment, 42,500 megawatts is installed. It's a long journey. We have done much. We have hurt ourselves. There are issues, but fact of the matter remains that we have done quite a bit. In 2007, as the Director General Energy Management, country's first Director General Energy Management, I had a survey conducted. That survey was to find out as to how much of power in megawatts was being used up just to charge the cellular phones, the cell phones we have. In 2007, I found out that in Pakistan, including Karachi, we were using 69 megawatts just to charge our phones. And when we crafted a conservation policy for Pakistan, people were also told not to leave their cellular phones charging overnight. You have to check, and when it is fully charged, it has to be shut, taken off the hook. Otherwise, it is also wasting power. We also told the countrymen that if you do not shut your TVs and other domestic gadgets, right? They remain on the standby mode and they still use energy. One of the reasons why we have heavy bills. And of course, the UPS, it is a monster. The normal efficiency of a UPS is like 17%. It would provide 1.7 units while eating up 10 units to get charged. And the best of the best, the efficiency is 37%. Right? So these are the things. But imagine in 1947, we had just 60 megawatts. In 2017, we were using 69 megawatts just to charge our phones. We have come a long way. When WAPDA was set up in 1957, gentlemen, the country's generation was 119 megawatts. So between 47 and 58, say 11 years or a decade to be precise, the country had added how much? 119, just 59 megawatts, right? And from 59 onwards, it has been development. So WAPDA also assumed the duties of distributing electricity.
right? So the electricity departments with the provinces were merged into WAPDA, and WAPDA kept on following the same rules which were formulated by the electricity department. And when I joined WAPDA in 1974, half of the staff which I had come from the provincial electricity departments, mainly from the KPK. It was the Northwestern Frontier Province then, and the Punjab. Nobody from Sindh, not even one. It was something very interesting, very, very interesting. Interesting. So I wanted to find out why we had people from mostly from Khyber Pakhtunkhwa and WFP, comparatively less from the Punjab, and nobody from the Sindh. The demography, when I went into the sociology, I found out that in the northwestern frontier province, the most sought after, the most sought after discipline of engineering was electrical because of the small hydro generation assets over there. Right? In Punjab, because of the huge network of canals, roads, buildings. So the best thing which could be asked was civil, and maybe second was mechanical, the third was electric. In Sindh, because there was no electricity, but it had a huge network of waterways, waterworks, right? So strangely, the Muslims would go for civil engineering, and the Hindus, the Hindu minority over there, they, as the second best, would choose electricity, but they didn't have much. Things have changed now, but this was the reason why there was a propensity of people from the northwestern frontier province in Wapa. This was the reason. I mean, the Punjabis and the Sindhis, they did not like electricity much. They were more interested in civil and civil engineering. So WAPDA took over, and it became the face of Pakistan's development. And now you see power plants upon power plants, transmission lines. And gentlemen, you'll be surprised to know that Pakistan's first extra high voltage transmission line, 500 kV, laid between Tarbela and Faisalabad, Gatti Faisalabad, was set up in 1978. It was the first in Asia. China did not have it. Japan did not have it. India did not have it. What to talk about the other countries? It was a marvel. It was set up by resource by our brother engineers who were trained वो तो सामने चार्जर तो लाना by Canada. They were आ trained जाती है ना प्रभु बेचारी they were trained in Canada and in the USSR. And all of them, it was the batch of 1968, 64 youth, all of them. They could speak, of course, English. All of them knew Russian also. Wonderful. And most of them subsequently became the CEOs or MDs of entities. Great group. I mean, one group of people graduating in 1968, and everybody reaching the top, and everybody attaining the best of proficiency in engineering. So in 1978, we were the first ones. Then we had the best of the generations. And not to be forgotten, the first coal-fired 150 megawatt fluidized bed combustion power plant was set up at Lakda, again by WAPDA. It was unfortunate. There were many issues to it. There were teething problems. We were not able to take care of it, and it stands scuttled at the moment. And because it was a near failure because of many issues, we need separate time for it. WAPDA stopped forays into coal generation. Had that plant, which achieved COD in 1994,
Had it been successful, Thar coal or other coals, local indigenous coals, fired plants would have been a success much before we had taken Thar into the landscape. But what happened was, by and by, WAPDA's top management turned from professionalism to generalism, or generalists took over the management of WAPDA. Now, this is a national scourge. In 2023, it is a cardinal sin, Gunahe Azim. It is a cardinal sin that generalists having general education are heading technical departments, or they're deciding what to do and what not to do. So, with that downhill slide, right, World Bank came in, suggested that WAPDA's power wing needs to be unbundled. So when it was unbundled, it resulted into the creation of PEPCO as the management company, which I headed, of course, and then 9 discos, distribution companies, 4 generation companies, taking care of the public sector assets, and 1 national transmission and dispatch company. So we have added 2 more distribution companies to the tally, the Sakhar Electric Power Company, and which is nearly stillborn, the Hazara Electric Supply Company. So we have done a little bit. So we have ended up with that. And it was hoped that in 3 years, all these companies will be corporatized and then bundled off through privatization. Nothing has happened. It is a very, very difficult proposition. And with it came the boards. Each company was a corporatized entity. It was a company which works under the company's ordinance first and now the company's act. So the boards are the management. It's like that. And please, आगे चलिए, पीछे पीछे वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए, इससे वापस. So this is the shape. We had the vertically integrated national power utility, WAPDA. It had many issues, overlapping policy, regulation, ownership, control and management functions, highly cross-subsidized tariffs. Now, the last of the things is very important. This was against WAPDA, that it has cross-subsidized tariffs. High-end consumption is actually subsidizing the low end. The lifetime customer gets subsidized by whoever uses more electricity. And with it, we came with what is known as the load suppression model of tariff. That means the more you use, the more you pay. Against what happens in the world, where the more you use, the less you pay. The rate reduces so as to entice more consumption. But in Pakistan, it was a load suppression model. Now, that was good in 1961 when it was first formulated. It is 2023 now. I mean, we should let it go. We talk of what? We talk of excess capacity. You hear it every day that Pakistan has excess capacity. I differ from that, but let's believe in that. So if you have excess capacity, you have to entice, cajole, even force people to use more. So how do you do it? The first thing is pricing, right? Then regulations, of course. Pricing means the more you use, the less you pay. Simple as that, right? And if at all some subsidies have to be given, because it is a socio-political or socio-economic obligation of the government, then those subsidies should be paid by the government out of taxation, right? So this is the problem now. So this was it. These were the reasons why WAPDA was debundled, and we thought that we'll have autonomous, efficient, and financially viable corporate entities. We'll have independent regulation. Commercial principles will take over normal operations, and we have well-targeted subsidies. Next, please. Next, let's move to the next. Next, please. Next.
So with this change, we ended up with what? Pepco responsible for ex-Fabda powering operations till privatization. Now I'm talking of 2007. It was decided then, right? Otherwise, the corporatization took place in 1996. These companies, Discos, were set up in 1996, and Pepco was made independent in 2007. Between this period, Vabda was also Pepco. Chairman Vabda used to be the chairman of the Pepco BOQ. The managing director Vabda was the managing director, Pepco also. Right. So Vabda did not let go of Pepco and the corporatized entities. But then I say that it was good that they didn't let it go. Right. But now there's no going back. We cannot go back. People ask this question whether we should go back to Vabda or not. No, it's done. Right. There is a Punjabi dictum which I would narrate. It's a great dictum. It explains all. It says, Nani ne khasam kita bura ki. Old woman, getting married again. Bad. Khasam karke chhad deta hor bada. You cannot go back. It's a bad thing. Mayoob hai jo kuch hua, but it is done now. Right? So, what happened was Pepco became the face of Pakistan power sector, right? And taking care of planning, all that. Right? Next, please. Thereafter, we set up the Genco Holding Company, and it is a great study for all of us. The Genco Holding Company was quickly handed over to one of the finance directors of one of the four companies which the holding company managed. A generalist. He was not a finance man. He was from the accounts. And he remained the CEO of Genco Holding Company for good, I don't know, 6 years, 7 years, or 8 years. We only know him. And during this period, all assets of Genco, state-owned, were destroyed. Now, the Gencos, all four of them, have nothing with them, except two plants, the this 787 megawatts Gudu power plant and the 425 Nandipur. So those are comparatively new ones, which I started. Those can run if at all somebody wishes to run them. Otherwise, all Genco assets are gone. All state assets are gone, and they have not even been mothballed. When you have to when you have to shut a plant, you mothball it. सर्दियों में जब आप कपड़े बंद करते हैं तो आप उसमें फरनैल की गोलियां डालते हैं. फरनैल की गोलियां आर mothballs, राइट? इसलिए कि इसे कोई खा ना ले, जब नेक्स्ट टाइम निकालना होगा तो बीच में से निकालना. इसी तरह प्लांट्स को जब शट किया जाता है तो उन्हें mothball किया, ताकि जिस दिन चाहे फिर चलाया जा सके. मॉथबॉल भी किसी ने नहीं किया, क्योंकि जर्नलिस्ट है, उन्हें तो पता ही नहीं था. उन्होंने कहा यार बंद करना जो है वो यूटिलिटी पावर प्लांट का जो है वो मौत. आप सोच नहीं सकते कि ये बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं, जब तक इन्हें क्रैंक न किए रखें तो पता ये चलता है कि क्रैंक शाफ्ट जो है वही सैग करता है. ये हाल है. लेकिन दिस इज हाउ इट इज. So all in all, it's a bad. Next, please. Next. Some information for you. That the total disclose in 11 months of the last financial year, between the 1st of July 22 to the 31st of May 23. The whole system purchased 104 billion units of electricity. We lost 16.5 billion units of electricity, which converts into 15.80. And this is on pace of some overbilling also. If you add that
percentage of overbidding, which could be anything between 5 to 10%. That means the loss could be 25 billion units. And each unit at the moment is costing 30 rupees to produce. So you can imagine how much is the loss. Next. This gentleman is very, very interesting. Up to May, the receivables of the sector are 2.2 trillion. People talk about the circular debt, that it is like 2.5 trillion. They forget that the receivables of the sector are also 2.2 trillion. That means if the receivables are received, the whole circular debt can be paid for. And in this, governmental owned entities, provinces, right, and people, including the KE, which owes us 386 billion. They don't pay, they just receive the power. Now, this is the kind of management which we see here, right? But fact of the matter remains that 2.2 trillion, this was till 31st of May, probably it has increased. It is like 2.5 trillion. This is the kind of receivables that are needed to be recovered. Next, please. This gentleman is very, very important, right? Incorporation of PEPCO 1997. In 2007, right, the default was 415 billion, which is 22,188 now, as I told you earlier on. And the circular debt was 209 billion, which has become 2.4 trillion now. And there is a little bit of respite when the default has come down, when there's no circular. This was the time when I was the managing director. It's no issue. All you need is to work. That's all. You don't have to do anything. Don't sleep. Take up focused hard work, right? And assure that all your colleagues work. You have to have leadership so that everybody owns whatever has to be done and works. No one Newton can do everything. It is not possible. So we need people who can move things. Next, please. Now we come over to the actual lecture. This was just the background. Where have we ended? Gentlemen, we have a surfeit of policies. Surfeit means we have too many policies with us, right? Policy upon policy. And some of the policies are even at loggerheads with each other. One policy says something else, the other says something else. And none of these policies are for the good of the people. The basic requirement, gentlemen, for a policy, just remember this thing, is for it to be good for the people. This is the only way in which a policy can be labeled as a national policy. None of these policies is for the good of the people. These policies basically assure that somehow or the other the power sector stays afloat, right? All its inefficiencies and its issues are being catered for in these policies. And the policy says that first of all you have to fulfill, clear the debt of the sector, and then you start looking for the good of people. So, gentlemen, at the moment, there is a policy failure in basically the energy sector, but because we are talking about the power sector today, it is a failure in the power sector.
So what needs to be done? Probably let's follow what Bangladesh did. It was 3 years ago. They issued a one-page national power policy for Bangladesh. What did it say? It said that in X number of years, which was like 2030, the whole of Bangladesh will have grid cover, period. That's all, the policy ends, right? So when policy implementation plan is prepared, it is prepared with the goal of achieving full grid cover for Bangladesh, for the country. In Pakistan, we have two ratios with us. If we talk on the basis of geography, as they say, right? Then we see that like 48% of the country's land mass has grid cover, has a semblance of grid cover. It may not be a real grid cover, but a semblance. And when we talk about population, it is said that 56% of the people in Pakistan are connected to the grid in one way or the other. And now everybody, especially the politician, right, who thinks that he is the ultimate, would simply come and say, let's make everybody autonomous. Let's fix a solar panel on each person's back so that he becomes autonomous. Let's forget about it. It is bad policy. They talk that it is very difficult to provide electricity to the people of Balochistan. So we'll have solar panels first. I'm hearing it since the last 10 days, right? Either the Baluchis are running away, they are not offering their backs, right? Or it is all poppycock. Nobody is really interested in even providing solar power. We need to have a vibrant grid system all over the country. That grid system should have access to renewable energy, right? And if you think that you should not have central generation and you wish to go for distributed generation, why not? You can do that. But retain the grid. It could be, split up into 5, 6 portions. The western grid, the eastern grid, the northern grid, the southern grid, and then you have the capacity to dovetail them. You can do all those things. But the unfortunate part, gentlemen, is that we have deficient policies. So when you look towards amelioration of correcting the crisis, the ongoing crisis, the first requirement would be to correct the policies. Sit together, the terms, people who have the experience should sit together, put all the policies on the table, right? See what is good for the people, what is not. What has been misused in the past and what helped the people. So once you go into it, you understand the problem, you are sure to come up with a solution. The second problem, gentlemen, is the governance of the policy. The governance. Now, nobody knows who governs the power sector. In Lahore, people think it is less, right? In Multan, it is MEP. In the tribal areas, they say there is some monster by the name of Tesco, tribal electricity supply company. The governance is not with these districts or with the NTDC or with the GenCos or with the regulator, NEP. It is with the power division. Now, the governor, the entity which has the governance of the sector, which is most important, is the power division. Now, let's look into the power division. The power division has no power sector utility professional with them. They are all generators. And they come there for a tenure between 6 months and 3 years, and then they leave. They access some so-called experts, people who are near them or who are ready to be
near them, right? They call them and try to learn things. They enter into a learning curve. By the time they have learned a little bit of it, a semblance, at least now they know the buzzwords of the power sector. It's time for them to go. And the cycle, you know, continues. So the governance in Pakistan for the power sector is with the generalists and those who are not permanent. They're not permanent. They're there for a small tenure and they go. And then probably the present minister is the 37th, right? And I'll take you back to the Pakistan Business Council. There is a Pakistan Business Council, very important body. It comprises of all the big business houses of Pakistan. So they invited the Indians, the Indian Chamber of Commerce. They invited them, they said they need to get together and let us cooperate, right? Our commerce ministry was there to look after. I was also part of that delegation or that group which were interacting with the Indians. I came across the Indian Joint Secretary from their Commerce Ministry. Tall man, balding, thin, tall, balding. And I thought that I knew him. And then I remembered that 8 years ago, I had seen him in Islamabad while he was there for an agreement with Pakistan in the Commerce Ministry. I said, very strange. He was in commerce then, 8 years now. Again, I've been told that he's in commerce. I'll just ask him where he has been in between. I asked him, Mr. Sharma, I last saw you there. That was 8 years ago. And I was told that you are from the Indian Commerce Ministry. And now again you are in the commerce. Where have you been in between? He said, nowhere. I'm in the Commerce Ministry since the last 10 years. So he was an expert, right? They do not transfer people at will. There is no requirement of tenures. Somebody is good, you retain that person. And secondly, you have to have experts, people who are institutional memories. Don't kick out people and bring in new, right? And then I came across, and then by the way, he was representing the government of Pakistan, government of India, a joint secretary. In Pakistan, a joint secretary is just a glorified clerk, nothing else. The federal secretary or the additional secretary, they think that a joint secretary is nobody. And there he was representing his country. And before that, 8 years before that, he was also representing his country. Then I came across a lady with spectacles, not that tall, right? And she was wearing Pakistani shalwar kameez. And I said, lady, I've seen you before. She said, I've been in parlays with you. When, Wabda was thinking of exporting power to India. That too was there once, right? And I'd come over to Wabda House and then we also met at your secretariat at Islamabad. She was the deputy secretary from their Ministry of Energy. And she was also there since the last 10 years. And a deputy secretary had come to Pakistan then for the Business Council and in the earlier meetings too. And in our case, the deputy secretaries in the federal government are not even clerks. They are even less than that. See the difference? Well, so this is the policy. It is in the wrong hands, and there's too much of policy at loggerheads with each other. We need to correct that. The second is governance. As I told you earlier on, the governance of the power sector is with the power division, right? And they have not even one professional working for them. They have 2 or 3 revenue officers with them who, on deputation from WAPDA or from the companies, and who act as the SOs and assist them, but they are no clerks, right? Then we come over to the management. After the governance, who has the management? Right? You would think that it is the chief executive officer,
and his general managers and chief engineers and directors and whoever, right? Gentlemen, the management of the companies, the discos, NTDC and the GENCOs is with their board of directors. Right? Now, I'll just talk about LESCO's BOD as an example. LESCO's BOD has 3 ex officio directors who represent the owner, the government of Pakistan. One of them is from the power division, the other is from commerce probably, and the third one is from the finance. Fine. They represent the owners. Okay, they are there. So they are out. And then the fourth ex officio member is the CEO himself. CEO is a professional. Fine. So let's forget about these 4 people. Now we come over to the rest of the 7, right? The 7, out of these 7, 6 are the sons, the progeny, the sons of MPAs and MNAs, right? And young, smart. And they themselves say that we have come here to learn. ठीक है जी माजरत के साथ उन दलों ने इसे मदरसा बनाया. Now the BOD should comprise of what? Senior professionals who are going to manage the company. You have sent 7 kids. They may be the best. I'm sure they are educated also, which of course they are not. But I'm sure, right? But what are they doing over there? Why are they, wasting time? They may learn something, but by then LESCO will be sunk. And you'll be surprised to know it that out of those 7, right, one of them is an employee of the Punjab Health Department. She's working there and he's also one of the Zindabad. Zindabad. इसे हमारी जुबान में मुल्तान की कहते हैं सही डबल थी की. Right? Gone through the roof. What kind of a joke is this? Right? So the boards are not working. This is just an example, but it is good for all of the companies. Presently, the boards are 100% politically fit. Doesn't matter if the government, for example, the Labour Party comes, the Conservatives come, and they post some of their own people, right? But they have to be experts. They have to be professionals. You just can't send your sons over there to get trained. It's not fair at all. Right? I will, if I name all those gentlemen whose sons are here, you'll be surprised. But fact of the matter is that this is so. So the management crisis is because of the lackluster BODs, the incompetent BODs, these generalist, not even generalist BODs. So what happens is you have circular policies which are at loggerheads with each other. Then the governance is with the power domain, which has its own problems. They are generalists. They may be the best people on earth, right? But probably we need specific good people, specific best people, not anybody. And I've just told you about the BODs. Now let's come over to the operational management. Now that operational management is indeed with the CEO and his team. It is there. That is the operational man. I'll take you back to 1974. My first field posting was in the Multan region. See how good the people were? The Water and Power Development Authority got together. They looked at the domicile of engineers, their new officers. And they didn't want to be harsh to them or didn't want them to face problems. They understood that in the civil, there are, houses are not there, accommodation is not there, schooling is an issue, so on and so forth. Because my domicile was from Multan, they posted me to the nearest vacancy, which was at Muzaffarpur.
One of my friends, another of my colleagues, he was from Rahimya. He was posted to Khan. Another of our colleagues, right, he was from Saiwal, so Saiwal didn't have a vacancy. He was posted at Bhawan. See how the things are. Beautiful. I mean, they didn't want to hurt people. They wanted to be helpful. Now, let me tell you about the hierarchy of the Multan region. It was headed by one grade 20 officer, a chief engineer, who was assisted by two TOs, technical officers. Two TOs, they were known as technical officers, TO, and they were of the rank of an X, graded two TOs, right? Of course, they had the director accounts, grade 9. There was a director accounts because he had to take care of billing and the accounts, the finance, the revenue operations were also taken care of by that director accounts. And there was a senior superintendent admin to take care of the admin issues. That's all. Now, this was the region. Now, let's come over to LESCO. LESCO, gentlemen, at present has 21 officers in grade 21 and in grade 20 and in grade 21 looking after the marine. Same company. It had one grade 20 officer looking after it, one chief engineer with two TOs, one superintendent for admin and a director accounts, right? And now LESCO has 21 officers in PPS 20 and in 21. I was just explaining this thing to someone when I had gone to lecture at Nipa, Balochistan, Quetta. To one of my friends, a Balochi, he said, "Sir, हमारी जुबान में इसके बारे में एक ज़रबुल मिसल, यार, ये टॉप हैवी डिस्कोर्स की ज़रबुल मिसल बलूची में कैसे है?" उसने कहा, "जी है." तो मैंने कहा, "आप फरमाएं." तो उन्होंने बरावी में कहा जो मुझे समझ, अगर वो सिंधी में कहते, सरायकी में कहते, समझ आ जानी थी, बरावी नहीं आई। तो मैंने कहा, आप इसका तर्जुमा भी समझा दें। तो उन्होंने कहा, ये तो वही सिचुएशन हो गई कि जिसमें जो कुत्ते हैं वो रेवड़ से बढ़ गए। क्या क्या बात, रेवड़ को चलाने के लिए तो एक कुत्ता चाहिए, वो घूमता है, वो ये डेरोगेटरी नहीं है, बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। वो कुत्ता घूमता है, गडरिया है, और वो कुत्ता सारे रेवड़ को पठाता है। गडरिया आ गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट? उसने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, रेवड़ से कुत्ते बढ़ गए। तो उसने कहा कि जी जब भी रेवड़ में हमने दो कुत्ते भी रखे हैं वो आपस में लड़ते हैं, मैनेजमेंट लेसन्स आउट ऑफ इट, राइट? सो आई विल नॉट delve on it a little more than that, but things अब हो क्या रहा है कि जब कॉरिडोर में वो 20 और 21 वाले निकलते हैं तो आपस में टकरा जाते हैं, कई जख्मी हो जाते हैं, दे आर टू मच। अब बिल्डिंग और बड़ी होनी चाहिए, राइट? एंड द सैड पार्ट इज, एक तरफ ये टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, दूसरी तरफ यू विल नॉट बिलीव इट, देयर आर 60,000 वैकेंसीज in all of the discourse at the moment. 60,000 vacancies, and out of which 13,200 are in LESCO. They are working without people. And who are the people whose positions are vacant? Assistant lineman, lineman, right? Line foreman, line superintendents, so on and so on. See, you have no people. You have become a top-heavy organization. You have no legs to stand upon. Yeah. अब क्या हुआ? रेवड़ कम कम. Without the services of assistant lineman, line superintendents, right? How can you work? Naturally. या खंबा छोटा करें,
You'll have to do something. जो भी आप कर सकते हैं, that means what technology लेके. When I say कि खंबा छोटा करें, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी लेके आए. Bring mechanization into works. Lineman को चढ़ना ना पड़े, उसे परेशानी ना हो. Buckets हो, right? Insulated buckets हो, वो नीचे है, उसमें lineman मेरी उम्र का भी है तो वो खड़ा हो जाएगा तो उसे कुछ नहीं होगा, ऊपर जाके कर लेगा, उसे चढ़ना नहीं पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? फॉल्ट पता नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिक जिसे कहते हैं ना एडवांस्ड फॉल्ट लोकेशन टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, राइट? सामान जो है वो टॉप क्लास हो, वो खराब ना हो, वगैरह वगैरह. सो न्यू टेक्नोलॉजीज कैन टेक केयर ऑफ दीज वेकेंसीज एंड दीज इश्यूज. लेकिन वो खाली है जगह, वो ऊपर से बड़े और टेक्नोलॉजी आ नहीं रही, राइट? एंड द जनरलिस्ट गवर्नर्स आर आफ्टर देम कि आप काम नहीं करते. तो दरअसल कोई भी काम नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता, right? काम कर ही नहीं सकते. फर्ज करें एक जर्नलिस्ट है, ही सिट्स फॉर ईच 36 आवर्स इन 24 आवर्स, ही इज नॉट गोइंग टू अकम्प्लिश एनीथिंग. 0/0 इज इक्वल टू 0 वर्नाकुलर में जो कहते हैं. सो ये इश्यूज है. अच्छा, नाउ coming over to some other things also. There are certain externalities which affect the power sector operations. Gentlemen, what happened was I conducted a survey. I have an extra qualification. I have many extra qualifications, but one of them is a post-graduation in statistical sciences. So I'm good at survey and all that, at number crunching. I understand what data has and what power is in your hands when you are able to crunch data, right? So we went around, we saw that where BAPDA had invested in its infrastructure, the operations were good. Unfortunately, 68% of the investment during the last 35 years was made in the Punjab. And rightly so, because Punjab had the demand, the load, the consumers. So it had to spend over there. But only 32% was spent in the rest of the country. So their system is not standard. It is even lower than what LESCO has. LESCO is also substandard. But the infrastructure in Balochistan, in Sindh, in Khyber Pakhtunkhwa, in tribal areas, the erstwhile Pata, is below par. So I see that where we have not invested, the power sector operations are compromised. Then I went for something else. Went for what is known as the HDI, Human Development Index, developed by the UNDP of UN. Right? The Human Development Index depends upon roads, schools, hospitals, police stations, courts, and all that. So when it mapped HDI for Pakistan, Punjab was green. Green means compliant. Sindh, some parts, Hyderabad, Karachi were orange. The rest was red. That means totally non-compliant. Lower than the national HDI, Human Development Index. Balochistan was totally barring Quetta. Quetta was like orange, semi-compliant. It was all red. Khyber Pakhtunkhwa, barring the Peshawar and the Swat valleys, which were green and orange. The rest was all red. So it also led us to the same conclusions as that of the first fact. When I said where investments had not been made or less made, the power sector operations were compromised, and so were the operations when we considered the HTA. Why I am worried about the externalities? Because the federal government must understand these things. अब धक्का नहीं लगा सकते. You have to know what external. Suppose an area is extremely hot, you have to prepare for it. And there's an area which has winter like 9 months in a year. So the operations will be different. You'll need different equipment, different people, different trainings. And the third was we went for per capita income of each district. Right? Most of the districts in Punjab, barring a few of the southern Punjab, had a per capita
income which was more than the national average, right? While barring 2 or 3 districts of Karachi, the rest was Hyderabad, the rest was all red in Sindh, the same in Balochistan, the same in Khyber Pakhtunkhwa, right? Meaning thereby that the per capita income was also showing the same results as that of investments, lack of investments or investments, right? The HDI, the per capita. And then lastly, I also went for another, which is known as the rate of the government. There are 5 indicators for plotting the rate of the government in any particular way. Meaning thereby that if you are an engineer and you're looking after a project, or for that matter, a sector, you have to be proficient in allied sciences. You must know your humanities. You must know what statistics are, right? You must have a degree in business or in finance. All these are all these are not standalone degrees. They take a ride on your back if you are an engineer, but you have to have these things. That means there is an issue of training also, right? So when we went for plotting the rate of the government, it was exactly the same. Punjab was green, the rest of the country was red. When there is no red, how can the electricity operations or the power sector's operations be good? You cannot disconnect people. People indulge in illegal extraction of energy, chori, right? They injure the lines. And that's why in Pakistan we have something known as, it's a very bad thing, guna hai, revenue-based load shedding. That from areas from where you get less revenue, you simply starve them of power. Now, this could be for 2, 3, 4 months, 6 months while you mainstream people. But in Pakistan, it has been adopted as a permanent feature. And whenever a company thinks that it is losing, right, it is not able to collect, its recovery is low or losses are more, they simply resort to more load shedding. You understand? So when all these 5 were got together, the power sector operations and the rest of the 4 things, all of these were coterminous, leading to the same results. So these externalities have to be kept in mind before you try to take care of the sector. Last, and very interesting, is the existential threat which is posed, which is being faced by Pakistan on account of the IPs. It is an existential threat. If we do not treat this malice, this disease, if we do not come up with a solution to handle the IPPs, we will be dead. Just remember this thing. It is an existential threat. Now, what is the issue? The issue is that all of the IPPs are over invoiced. Suppose the actual cost of setting up of an IPP was $100 million, right? Out of which 20 million was the equity to be arranged by the sponsor, right? And 80% to be secured through loans and all that. It was, over invoiced to say 120. So there are phantom equity. There are no equities in nearly all of the cases. So they are getting returns on phantom equities. No equities, but still they are getting return in dollars between 13 to 18%, right? On 20% of the cost of the project, whereas they have not invested even one single dollar. This is one of the issues. Now what happens is, when these IPPs came and when they are still coming, we do not have people like the Indian Joint Secretary and the Indian Deputy Secretary, who are institutional memories. We have new people every 6 months, 8 months, 9 months, 1 year, right? So once you do not have the institutional memory, so whenever some IPP comes and you have to negotiate the power purchase agreement, you know nothing.
You are a student, right? You try to learn from him. So he teaches. And he has taught us all, like anything. So the PPAs have not been intelligently and correctly negotiated. Over invoicing, and then there are issues with the PPAs. Those have not been negotiated. There is a lot of small print in it. So much so that the original PPAs for 16 IPPs that set up under the 1994 policy. After that, we had the 2002 policy. In the 2002 policy, we had learned a bit, and we said that there will be no over invoice. Great. Then it was said that the returns will not be dollarized. Those will be in Pak rupees. And then we said that there is no need for foreigners to invest here. Let us support, let us do something and support Pakistani corporations, corporate houses to invest in that. So we came up with 12 new IPPs, and all of those are owned by Pakistani corporations. That's a big thing. But before those IPPs could mature and achieve COD, the sponsors went over to the then government and they said, ये खुला तजाद नहीं, बड़ा अच्छा वाला. उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा जी उनको डॉलर दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे, उनका तुम भी ले लो. Right? So all the gains which were originally there in the 2002 policy were squandered, and they were also given the same thing. क्योंकि खुला तजाद तो नहीं होना चाहिए. एक दफा आपके साथ हुई है, दूसरी दफा भी होनी चाहिए ताकि ज्यादा स्वाद आए. You get my point, right? So that effort too was squandered. And then came a host of other policies. 2006 policy came, then 2013 came, then the 2000 policy of 2015 came. And under that policy, last of the policies, these coal-fired plants were set. In that, right, NEPRA had to suggest and propagate an upfront tariff. For example, it is 6 cents. Propagated. Now you had to agree to it if you want to set up an IPP. In this case, the government itself took up case with the regulator that the upfront tariff is too less. It needs to be increased. Right? And as a result, we see projects like Sahib. Right? It's a long story. But what happened, some Chinese came over to me and they said, kindly help us get a project. I said, no issue. Pakistan is a fertile ground. We have projects upon projects. I'll take you to Randhawa Sahib and we'll get a Punjab project. Right? He said, no, but we want a special one. I said, what speciality do you want? He said, we want something like the Saiwal project. I said, what is so special about it? They said, there's not much special about it. It is earning $25,000 each hour. We want that. Our managing director has told us that if you think that somebody can get us that, then it's fine, or you come back. So that's the new, right? The holy grail. That's the heaven. Everybody works for it. Right? Now, the last good report that came in this regards is known as the Muhammad Ali Commission. It was authored by the present caretaker Minister for Energy, who is a chartered accountant. He has been the chairman of SECP, and he wrote a mighty fine report. He sought help from many others. I was also one of them. And that report was beautiful. Report laid out a map for Pakistan. It said that the first part relates to over $600 billion of wrongful invoicing. I mean, we agree to the PPS, we agree to all the conditions. The invoicing is wrong. यानी कि आपने 1 किलो गोश्त लिया
तो आपको उसने 0.1 लगा के 10 किलो का बिल दे दिया। तो उसने कहा रॉन्गफुल जो इनवॉइसिंग है उसकी हुजम वॉल्यूम जो है वो 600 अरब। So this needs to be got back. And then they said there is wrongful interpretation, right, of the various covenants sections of the power purchase agreements. तशरीह गलत है, उसका हुजम जो है वो 2000 अरब 2 ट्रिलियन, यानी कि उसकी असल तशरीह ये है। मौलाना मौदूदी साहब ने ये कहा है, ये कहां से आ गए, ये इन्होंने बीच में से नहीं निकाल दिया। ये wrongful interpretation है of the various conditions or covenants laid down in the PPA. So आपको दूसरी प्रॉब्लम पता लगी, wrongful invoicing है, wrongful interpretation, right? And thirdly, he said the third relates to outright fraud, blatant over invoicing and other issues, right? And then he suggested that the best way is to consider this as the basic document and then have a forensic audit conducted on it. And at that moment, something happened. Or colored with the fact that it is all corrupt. Recording in progress. We have to take care of it. We have to take the bull from its horns. We have to correct the things. People are there who can do it, especially the caretaker minister at the moment, because he is the one who's written the report. He understands this thing, right? So it needs to be corrected. Until and unless we correct it, the rest of the issues will also not help. But in the order of precedence, policy has to be corrected. Governance has to be upgraded to professionalism. Management of the boards have to be replaced with professional BODs. Operational management, the CEOs have to be picked up by a panel of experts, not by the board, not by the secretary alone. 6, 7 experienced people must get together and then finalize that he's the best. The way the Federal Public Service Commission also works, there's a permanent commission, but they invite professionalism. What happens is the Federal Public Service Commission does what? It has a permanent commission, and suppose they are interviewing engineers, they call 2 professionals to assist them. They are the experts. This is how you do it. You'll have to do that. Manpower issues have either to be, so 60,000 vacancies have either to be filled up, or technology solutions have to be given to replace them. Externalities, I'm very clear about it. The federal government, the provincial governments, the local governments have to support the power sector operations. Otherwise, collection of revenue or any effort to stop illegal extraction of energy will ever remain a mirage. You can't do it. And the IPPs have to be taken up by their funds. Next, please. And I know it. I want to see that. Thank you. And gentlemen, if there are questions, I'm available. Please. देखें मैंने आपसे क्या बात, मैंने एक ही बात की, ये नहीं मैंने कहा कि कत्ल कर दे, मैंने तो कहा ही नहीं मैसेकर नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे ये कहा कि दिस इट शुड बी पुट ऑन होल्ड। इस वक्त आप पे नहीं कर सकते, आप इसे रोकें। इसके बाद इस पे टर्म्स जो हैं बड़े सरों वाले वो बैठ के इस पे डेलिबरेट करें कि हमने क्या क्या। ये हो नहीं सकता कि आंसर ना निकले। एक इंटरनेशनल लॉ की कंडीशन है, आप ध्यान में रखें, इट इज नोन एज द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मैंने आपको कह दिया कि मैं इतने पैसे दूंगा, मेरी तो वर्थ ही नहीं, मैंने कहां से, तो इसे कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और लेकिन उस वक्त ही जब मैंने वादा किया था, अब नहीं है। तो जब ये हो जाए
तो इसमें लॉ स्टेट करता है कि आप इसे नल एंड वॉइड कर सकते हैं। बट सपोज मैं गलत हूं, कोई बात नहीं, 25 मोहम्मद अली इकट्ठे किए जाएं, उन्हें बिठाया जाए और इस पे सोचा जाए। ये तो नहीं हो सकता ना कि मोहम्मद अली साहब ने फरमा दिया कि सब इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, तो इसलिए ये है कि हम अपना सर अपने सर में भी मारे हैं आप गोली। ये तो नहीं हो सकता। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये याद है सर। Currently, nobody knows you want to know what exactly I will, sir. I will. According to what the present caretaker minister has said, he says that nothing can be done now, right? In 2020, he said much can be done. But I agree, once you are on the seat, things change, and there are certain ground realities too. Sir, there are no different PPAs. All PPAs are just the same. And that document, just the same, is there to out fraud. That's it. Fraud. Yes. If you are a fraudia, wo usse bade fraud. Out fraud इसे करें. Right? अच्छा, ये दीवाने गालिब जो है ना जी, ये वर्ल्ड बैंक ने ऑथर किया था और ये हप्को जो है वो लेके आए सबसे पहले। वो 94 की पॉलिसी के नहीं थे, वो उस पॉलिसी से पहले आए थे जी। वो पहले जब आए थे तो जिया साहब की 87 में उन्होंने गवर्नमेंट को मनवाया था कि अब वापडा को कोई जरूरत नहीं है कि वो थर्मल जनरेशन में जाए, वो अपना काम करे हाइड्रो जनरेशन में। और वो मेरे पास 1 पेज जो नोटिफिकेशन मौजूद, वो जिया साहब के जमाने में इशू हुआ था। और फिर वो चलते चलते वो लेके आए, वही टेम्पलेट जो है फिर आगे चला। 2002 की पॉलिसी के तहत टेम्पलेट को हमने चेंज किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में हमने कहा कि नहीं यार, इसमें फर्क नहीं होना चाहिए, सब एक जैसे होने चाहिए। फिर हमने इसे चेंज कर दिया। नथिंग इज कॉन्फिडेंशियल, ऑल दोज पीपीएस आर अवेलेबल। दैट्स नॉट द इशू। द इशू इज दैट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रपोजिशन, इट इज नॉट इजी, राइट? ये कश्मीर का इशू है तकरीबन, ऑलमोस्ट लाइक। इसे हल करने के लिए इंतहा की सीरियसनेस और अकल चाहिए। ईस्ट तैमूर का अगर मसला हल हो गया, अंगोला का हल हो गया, रवांडा का मसला हल हो गया, तो ये भी होना चाहिए, राइट? अगर ये नहीं है तो सारे हाथ भी तो हम जोड़ सकते हैं ना, पूरा मुल्क जो है हाथ जोड़ के बैठ जाएगा। काफी हो। मसलन आई एम ऑफ द ओपिनियन कि some of the plants should be bought out at a discounted rate by the government of Pakistan in Pak rupees. डॉलर नहीं, पाक रुपीस में, विद अ कैविएट कि आप यही पैसे किसी और प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में लगा दें। दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल सपोर्ट यू, आप उधर बिजनेस अपना कर रहे हैं, हम पैसे तो आपको दें, आप बाहर नहीं लेके जा सकते। यानी कि एक एग्जांपल मैंने दिया, मे बी इट इज अ पाइप ड्रीम, हो सकता है, लेकिन अर्ज की कि जब आप टर्म्स बैठेंगे तो इसका हल निकलेगा। अगर इसका हल हम नहीं निकालेंगे ना, तो ये ज़हन में आप रखिएगा चलेगा। ये अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स है। पाकिस्तानीज कैन नॉट पे दिस। ये ठीक है, 105 का अगर वापस डॉलर हो जाए तो ऑटोमेटिकली कीमतें गिरेंगी। 300 पे, 250 पे ये नहीं हो सकता, ये बर्दाश्त नहीं है, इससे स्टाइफल होगी हर आदमी। अच्छा, ऊपर से जो है वो कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी है नहीं है। एक चीज आप मानेंगे कि लिविंग स्टैंडर्ड्स हैव रियली गॉन अप। इसी जमाने में जब लाइफलाइन टैरिफ हमने निकाला कि 50 यूनिट तक जो है ना कोई रेट नहीं होना चाहिए, उस वक्त जब स्टार्ट किया था 50 पैसे, तो वो 50 यूनिट में एक लाइफलाइन कस्टमर गुजारा कर लेता है। 35, 36, 38, 40, 45 उसके यूनिट आते थे, आप खुद बताइए। अब वही शख्स जो है ना, वो उसका लिविंग स्टैंडर्ड उसी का बहुत बढ़ गया, अब उसके 200 यूनिट उसे चाहिए। उसके पास क्या है, पहले उसके पास 2 बत्तियां थी, फिर पंखा आया, फिर पेडेस्ट्रल फैन आया, फिर एक कमाल की चीज है लेडीज की इमेंसिपेशन के लिए वॉशिंग मशीन ने कमाल की,
ठीक है ना, वॉशिंग मशीन बीच में आ गई, इसके बाद टेप रिकॉर्डर आ गया, टीवी आ गया, टीवी के बाद जो है माइक्रोवेव भी लोगों के घरों में वो आ गया, डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर आ गया, चार्जर ठोक लिए, यूपीएस आ गया। आप सोचते जाए नहीं डिश वॉशर, डिश वॉशर तो वो तो बहुत कम है, लेकिन ये नीचे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यूपीएस तो मैंने कहा ना वो आ गया। अब उनकी जी, और फ्रिज, फ्रिज आ गया, फ्रिज आ गया, राइट। सो अब ये चीजें नॉर्मल हो गई, वो कमजोर होंगी, पुरानी होंगी चीजें, बट वो हैं। जितने आपके इन्वर्टर्स आए, सॉरी इससे पहले स्प्लिट आए, स्प्लिट्स ने विंडो टाइप निकाले, तो वो गर्क नहीं हुए, वो सारे छोटे शहरों में चले गए, गांव में चले गए। जब स्प्लिट आया, स्प्लिट को फारिग किया इन्वर्टर ने, तो वो सारे स्प्लिट, सॉरी जो स्प्लिट है वो बिक गए, वो वहां लग गया है, और चोरी वहां बढ़ गई है। सो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैव रियली गॉन अप, बट फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेंस कि जब तक इसका कुछ ना कुछ नहीं करते ये ठीक नहीं हो सकता। और कुछ ना कुछ कैसे करना है, इकट्ठे मिलें, देखें प्लीज। आप शायद पूछना चाह रहे हैं। seriousness is ज्यादा भी willingness बाहर के अंदर एक बड़ी शक्ति बात है। willingness is there तो फिर मतलब engineers are there और intellectual minds are there। जैसे कोई और मसला हल हो सकता है वाहिद का, तो why not in Pakistan? लेकिन मेरा ये कहना है कि इसका vision of the leadership of the organization अगर brand देखी तो शायद इस सिलसिले में मैं देखें, मैं एट वन टाइम आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द वाइस चांसलर्स कमेटी, क्योंकि मैं रेक्टर था वापडा इंटरनेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, राइट। ये फैक्ट है कि जो हमारी इंजीनियरिंग एजुकेशन है वो बिलो पार। मैं तो अल्लाह हर जगह पे बिलो पार। सिलेबस इंप्रूव होने चाहिए, और इसके बाद सोशल कॉन्टेक्ट उसमें बढ़ना चाहिए, कंटेंट तो बढ़ना चाहिए। सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट्स नहीं है, ह्यूमैनिटीज पढ़ाई नहीं जाती है, वो पढ़ानी जरूरी है। इसके बाद एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस नहीं है, जिसे पावर सेक्टर को जो आदमी चाहिए वो तो यूटी बनाती नहीं है, आईटी वालों को जो चाहिए वो नहीं वो बनाते। नतीजतन वो सारे के सारे हमारे जो छोटे भाई हैं डिप्लोमा होल्डर्स, उनके पास वो सीटें जा रही, उन्हें भी मिलनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। इंजीनियरिंग एजुकेशन जो है वो बेहतर होनी चाहिए, और जो इंजीनियर हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत लैकिंग है, वो और बेहतर होनी चाहिए। और एडिशनल जो है उनकी एक्सपर्टीज बढ़ाने के लिए जो ऑक्सिलरी और एंसिलरी स्टडीज हैं उसमें तरगीब उन्हें मिलनी चाहिए, फिर वो आगे जाएंगे। मैं ये सारी बातें इसलिए करता हूँ कि मेरी मल्टी फैसेटेड एजुकेशन, और मेरे पास एलाइड ऑक्सिलरी और एंसिलरी जिसे कहते हैं स्टडीज जो मेरी बेल्ट के नीचे है, अदरवाइज हो नहीं सकता। तो अब इंजीनियर्स जो है ना वो मार खा रहे हैं, वो प्रपोजल्स नहीं दे रहे, इस सिलसिले में कोई प्रपोजल नहीं देते। इसका हल देना चाहिए ना, खाली ये कहने की तो जरूरत नहीं है कि काला बाग बना ले हो जाए। वन ऑफ है ना, काला बाग भी जरूरी है, उसे हम करेंगे, वो एक अपनी उसकी नाइश है, उसे वो पूरा करेगा, वो भी एक इख्तियार है, उसको सामने रखेंगे तो वैसी चीजें होंगी, वो अपनी जगह पे। लेकिन यह है कि कोई सोल्यूशन नहीं, इंजीनियर्स के पास कोई सोल्यूशन, और जो जर्नलिस्ट है उसके पास भी कुछ नहीं है। वो हो ही रहा है। नहीं, जस्ट मोमेंट सर, कदा कलाम आप, मैंने इसलिए ये कहा कि जब आपकी आवाज नहीं है, ठीक है जी, आपकी आवाज कहीं पहुंचती नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है आपके पास। वो जर्नलिस्ट जो है ना वो हावी क्यों होता है? सर वो सारी होगी ना, लेकिन देखें एक एक जर्नी चलती है, कब से हमने स्टार्ट किया। जिया साहब ने उधर ही वाज चीफ गेस्ट पीसी के दूसरे साल में, 78 की बात है, उस वक्त हम सारे मारगला होटल में बेसमेंट में इकट्ठे हुए थे। उस दिन ये पहली दफा कहा गया कि जो डिवीजन हैं इसमें इंजीनियर्स होने चाहिए, उस वक्त, अब नहीं बात होती। इसके बाद थैंक्स टू द पीसी आई वाज हेडिंग the committee for suggesting the service structure of engineers। 17 में वो सबमिट किया, राइट, वो पढ़ा रहा एसएनटी में, फिर पीएम सेक्रेटेरिएट में। अब रुखसाना जुबैरी साहिबा ने सेनेट से तो क्लियर करवा दिया। देखे ना, एक माइनर स्टेप तो हुआ है, अच्छा, लेकिन उसके अंदर जो लोगों को समझ नहीं आ रही, उन्होंने ये कहा कि जो इंजीनियरिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान है उसके लोग जाए, ठीक है ना। अब वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान तो है ही नहीं,
हर मिनिस्ट्री में 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 इंजीनियर अपनी जगह पे हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो अभी भी बड़ा काम करने वाला है, लेकिन कुछ हुआ है। तो जब आवाज ना पहुंचे तो बेस्ट काम होता है उसे कहें कि हमें कुछ प्लीज। 12 जी 12। देखें देखें मेरी बात सुने, कोको कोला को, पेप्सी को कोई नेशनलाइज कर सकता था, इंडिया ने किया। थ्रू देम आउट, उनकी सारी चीजें, इंडिया को तो किसी ने पारिया स्टेट नहीं बनाया। तो मकसद है कि फिर उस तरफ आप सोचें, लेकिन अच्छा कोई सोल्यूशन निकालें कि आप फारिग भी ना हो जाए और काम भी बन जाए। तो इसीलिए तो बार बार कह रहा हूं कि मैं नहीं सोल्यूशन दे सकता, मैं तो मुख्तलिफ दे रहा हूं, लेकिन इसके लिए लोग इकट्ठे, जो टॉम्स है, मैंने लफ्ज किया TOMES, बिग हेडेड, दैट मीन्स जो अकेले हैं, हम में से वो इकट्ठे हों, कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपर्ट, लीगल एंटिटीज के, इसके बाद इंजीनियर्स जो हैं, जो पढ़ते हैं, जो जिन्होंने बीच में से गुजारी हुई है, ये उनका कॉन्क्लेव होगा। फिर वो इस पे सोचेंगे, फिर देखेंगे ऑप्शन 1 to 20 है। 1 में आउटराइट नेशनलाइजेशन है। ये अभी परसों किसी ने बिजनेस रिकॉर्डर में जो है ना जी आर्टिकल दिया हुआ कि व्हाई डोंट यू नेशनलाइज द IBPs, राइट? ये दिया हुआ परसों, पढ़े हैं आप सारे। लेकिन इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, राइट? उसका तरीका करेंगे जी बेस्ट ये है, बट इट इज फ्रॉट विद डेंजर्स, राइट? 20th जो है ये बेहतर, इसे कोई हींग भी नहीं लगेगी, फटकड़ी भी नहीं लगेगी, और सांप भी जाएगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, प्लस वन हैज टू बी जुडिशियस। जो उनमें से ठीक हैं उनके साथ आपने क्या करना है, जो गलत नहीं है। अच्छा, जो गलत है उनके साथ क्या करना है। वो तो ये कहते हैं, चाइनीज ने स्ट्रेट अवे कहा कि हमसे कोई रीनेगोशिएशन नहीं है। आप सोए हुए थे, किसने साइन किए? आपने किए, मैंने किए? या तो कहेंगे जाली साइन, उन्होंने कहा नहीं किए तो हम सोए हुए थे। तो उन्होंने कहा जाए घर में। यू गेट माई पॉइंट? ये आसान नहीं है, लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। लेकिन खाली इसकी बात नहीं है, वो तो मैंने आखिरी बताया। मैंने ऐसे क्या आपको कहा कि मुझे बताएं पॉलिसी डेफिशिएंट है, पॉलिसी चाइना ने बनानी है। हाँ जी, इसके बाद गवर्नेंस के इश्यूज हैं। कहाँ गवर्नेंस आपने अटका दी है कीकर के ऊपर, अब कौन चढ़े कीकर के ऊपर? मैनेजमेंट क्राइसिस है। जो बोर्ड्स आपने बना दिए हैं वो आपने फायरवॉल ड्रॉ ही नहीं की, उसके अंदर जो है जो मर्जी आ जाए जी। अच्छा, बाय द वे सर, बाय द वे मैंने जो सजेशन दी हुई है ना, अभी भी फिर से दी है, वो ये है कि पेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेक देम गुड पेड। मैं इस सिलसिले में अर्ज करूंगा, मेरे समधी मरहूम हो चुके हैं, फौत हो गए हैं, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ अस्करी बैंक। तो जब वहां से रिटायर हुए तो बैंक अल हबीब ने उन्हें बोर्ड पे ले लिया कि वी नीड बेस्ट पीपल। तो आप अवेलेबल हैं, आप और बैंकिंग नहीं करना चाहते? उन्होंने कहा मैंने बैंकिंग अब नहीं करनी, जब रिटायर हो। उन्होंने कहा आप हमारे बोर्ड पे। तो देवर ही वाज पेड लाइक एनीथिंग। 2 गाड़ियां उनके घर खड़ी हुई, हेडक्वार्टर कराची, वो लाहौर रहते हैं, राइट? इसके बाद उन्हें बेहतरीन उनको पेमेंट मिली। तो आप खुद सोचें कि जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उन्हें पे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपर्ट्स लेके आए और पेड डायरेक्टर्स होने चाहिए, दें उन्हें 10-20 लाख रुपए। सो व्हाट? स्केल का उन सबको बोर्ड बना दे, जो 20वें स्केल के रखेंगे उनका एक बोर्ड बना दे, वही पैसे नहीं, वो तो शायद ना कर पाए, क्योंकि वेरिंग है ना जी सीनियोरिटी के उनके इश्यूज हैं। तो मैंने अर्ज की ना, जब आपके पेड डायरेक्टर्स होंगे, टॉप ऑफ द लाइन लोग होंगे, आंसरेबल भी होंगे। इसके बाद जब सीनियर लोग होते हैं तो वो प्रेशर से भी बाहर से वार्ड ऑफ करते हैं। आम आदमी कहता है सर बोर्ड नहीं करने देता, बोर्ड से बात करें। इधर तो बोर्ड खुद करवा रहा है। यू गेट माई पॉइंट? देखे ना, मैंने whenever I've held some senior office, मैंने सबको कह दिया यार, जो आपको कोई कुछ कहे ना उसे कहें, उससे बात बस, दैट्स इट, मैं संभाल लूंगा। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने रिंग किया, मैं एक एग्जांपल वन ऑफ दे रहा हूं। उन्होंने एक काम कहा कि ये
काम गलत था। तो अब मैं अगर उन्हें कहता मैं तो नहीं करता, वो तो चलना नहीं था। ठीक है, तो मैंने उनसे ये कहा कि सर ये पेटेंटली गलत है, मैं आपको ये करने नहीं दूंगा। अब वो बंदा अगला पूछे हो मैंने थोड़ा करना, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ। मैंने कहा जी बात ये है कि ये गलत भी है, लोग आपके पास हैं, आपकी जो है ना जी सुबकी होनी है। सबने ये कहना देखें प्राइम मिनिस्टर ने ये करा, मैं सर आपको नहीं करता, मैं नहीं करने दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, राइट। मकसद मेरा ये है जो सीनियर लेवल पे हो, अगर जानू पहचानू है जिसे कहते हैं, से कॉम्पिटेंट भी है, तो वो प्रेशर्स को भी वार्ड ऑफ कर सकता है। ही नोज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। अच्छा, जब ये ऊपर छतरी नहीं होती तो मार खाता। इसलिए बोर्ड जब प्रोफेशनल टेक्निकल सीनियर आएगा तो वो ये कहेगा कि जनाब हमसे बात करो, जो भी करेगा वो कहेंगे सर कंपनी का बेड़ा गर्क करना है, हम तो नहीं करने देंगे। आप वो चुप हो जाएगा, कहेगा ही नहीं उन्हें कुछ। ठीक है जी। तो इसलिए इसका हल निकलना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, और हल इसका यही है जी। शुक्रिया। हाँ जी प्लीज। ये जो और वापडा मूवमेंट होता है, इनकम टैक्स वालों का, एफडीआर का, टीडी का। अब इस्लामाबाद है, वहाँ पे जहाँ पे बिल्डिंग में 50 इंस्पेक्टर बैठे हुए, टीवी इंस्पेक्टर बैठे हुए। मैंने उनसे पूछा मैंने तुम्हारी क्या ड्यूटी है, वो कहते हैं मैं इलेक्शन मीटिंग में जाता हूँ, मैं सुना जाता हूँ। वापडा उनको दे रहे हैं, उनको 4-4-5-5 बोनस मिल रहे हैं, और वापडा के बंदे माल भी खा रहे हैं, गाड़ी भी खा रहे हैं। ये लोग चाहे उनका 5,000 का वो जमा हो गया, वो 15,000 हो जाता है, तो गाड़ियाँ तो वापडा को 15,000 की पड़ेगी। आपका जी मैं थोड़ा सा अर्ज करूं। ये जो दरमियाने मुल्क है ना दुनिया में, उनका इन्हिसार होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है, वो ये होती है कंजम्पशन। आपकी दो किस्म की जो है ना टैक्सेशन है, जरा आप ध्यान में रखिएगा। ये फायदा होता है इन लेक्चर्स का, अगर किसी को कुछ पता है तो वो बताता है। पोजीशन ये है कि एक है इनकम टैक्स, वो आपकी इनकम के ऊपर है, जो इनकम आपने जनरेट की वो दिखाते हैं, उसका 5% या 95% जो भी है वो ले ले। एक टैक्स है जो कंजम्पशन पे टैक्स, योर स्पेंडिंग, आप जो कंज्यूम करते हैं उस पे वो टैक्स होता है। ठीक है, तो जो दरमियाने मुल्क हैं उसमें क्योंकि इनकम टैक्स लेने की सलाहियत कम होती है, लोगों से ले नहीं सकते, मसलन इनकम टैक्स लेने की कोशिश की पीटीआई गवर्नमेंट ने, जिसमें कहा कि 6,000 रुपया फी दुकान देना होगा, और जो फाइलर है वो 3,000 था ना, तो वो 10 दिन के अंदर वापस हो। वापडा को कहा गया कि ये 3,000 6,000 आपने कलेक्ट करना है, उन्होंने बिल इशू कर दिए, वो बिल सारे नए बने, और जो बिल आया हुए उसके भी पैसे नहीं मिले। तो अर्ज की कि क्योंकि वो इनकम टैक्स लेने से कासिर है, ये नॉर्मल मुल्कों में है, जो दरमियाने मुल्क हैं, दे रिजॉर्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जिस तरह हमारे यहाँ है कि आप बिजली के बिल के साथ ले लें, टेलीफोन के बिल के साथ ले लें, फलां के साथ आप ले लें। तो जो एफपीआर है, अगर वापडा बुरा है तो एफपीआर बहुत ही बुरा है, मोस्ट इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसकी और हजारों की तादाद में उनके वो कासिर हैं टैक्स कलेक्ट करने। तो इसलिए आसान काम होता है कि बिल तो लेना ही लेना है, तो आप बिल के जरिए ले लें। तो अब उसमें जीएसटी है, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, रंधावा साहब लेते हैं, लेते रहे। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, ठीक है, लॉ में आ रही है, उसके मुताबिक चलते हैं, वो कलेक्ट करके दे दी जाती है। पर चलें वो है बिजली, क्योंकि बिजली बन रही है और उस पर समझ आते हैं। इसके बाद जीएसटी 18%, राइट। इसके बाद इनकम टैक्स है, फिर एडवांस इनकम टैक्स है, फिर फर्दर इनकम टैक्स है, फिर एक्स्ट्रा इनकम टैक्स है, जो घरेलू लोगों से नहीं लेते, वो लेते हैं कमर्शियल और इंडस्ट्री से। लेकिन अब अंदिया दिया है कि जिसका 25,000 से ज्यादा बिल होगा घरेलू भी, उसे भी विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ा। पहले ये होता था कि अगर आपके यूनिट 700 हैं तो पहले 50 यूनिट के टैरिफ हैं, 2 यूनिट उसका भी डाला, फिर 50 से 100 का डाला, 100 से 200 का डाला, वो यूनिट फिर कम हो जाता है। अब इन्होंने फिर बदमाशी की थी 5 से 11 देखें सर, मैं थोड़ा सा अर्ज करूं, वो आप स्लैबिंग की बात कर रहे हैं,
वो एक जमाने में इट कुड बी डन। अभी जो है ना बिजली एक ही रंग की है, एक ही उसकी प्राइस है, तो ये नहीं हो सकता इसको कम दें इसको ज्यादा दें। स्लैब जो है ना अब वो वायबल नहीं है। स्लैब इज नॉट द इशू, इशू इज कि 38% टैक्सेशन ये किसी और की है, ये वो खुद कलेक्ट करें, डायरेक्टली करें। अगर किसी के बनते हैं तो दे, किसी के नहीं बनते तो ना दे। ये हमारे जिम्मे नहीं होना चाहिए। आप पीटीवी नहीं ले सका, पीबीसी नहीं ले सका, आप रेडियो का भी आ गया 10 रुपए जी। तो मकसद मेरा ये है कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है और ये गलत है। अब आपका सवाल कि ये टैक्स का बनता क्या, आप हैरान होंगे कि ये जो टैक्स है ये ऑन अक्रूवल है। एक्रूवल उस दिन हो जाता है जिस दिन बिल इशू, यानी कि जो फर्स्ट राइट है ऑफ डिडक्शन जो है हुआ। आपने बिल इशू किया, फर्ज कर लें आपने 100 अरब के बिल इशू किए, तो उसी दिन उन्होंने, आप समझ लें कि 35 अरब ले गए। अब वो रिकवर हो या ना हो, ठीक है जी। इस वक्त पोजीशन ये है कि जो पैसे रिकवर आज तक नहीं हुए वो कुछ 600-650 अरब जो रिकवर ही नहीं हुए। तो इसमें मैंने तो अपने वक्त में चेंज करा दिया था कि ये एक्रूवल पे नहीं है, ये रिसीट पे। जो हमें पैसे मिलेंगे हम देंगे, जो पिछले भी आएंगे उसमें भी देंगे। नहीं, वो भी सच्चे हैं ना। वो ये कहते हैं कि अब हमारा काम तो नहीं है हम लेते रहे, आप उगराई नहीं कर रहे हैं आप करें। तो सभी सच्चे हैं, इधर सब सच्चे हैं। तो अपना काम नहीं करना, दूसरे के जिम्मे लगाए। अभी तो 95 की बात की, 95 वो छोटे छोटे भी आ गए ना। चलें 95 थे ना, कल रात तक 95 थे। हाँ हाँ नहीं, अभी नहीं खत्म नहीं हुआ। तो मकसद मेरा ये है, ऊंट से मतलब ऊंट से हमारी अपनी एक स्टेट होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि हम आज तो हमें तो पाकिस्तान को आज के डिस्कशन में क्या नाम लिख के भेजना चाहिए कि सिर्फ एक रेजोल्यूशन जाना चाहिए कि नॉन प्रोफेशनल जो है ना जी वो इस सेक्टर में ना हो, ये प्रोफेशनलिज्म इसमें ले आए। एक छोटा सा ही कहें, एक ही बात कहें, उससे होता क्या है कि जब प्रोफेशनल आएगा तो चीजें वैसे ही दुरुस्त। ये नॉन प्रोफेशनलिज्म है जिसकी वजह से हम मार खाते, उसे पता नहीं है ना। वो देखे ना, वो डॉक्टर जो है, अब डॉक्टर और बात करता है। और फर्ज करें आपने 2000 में आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी, आपको दवाई मिली थी। पाकिस्तानी का काम यह है कि 2023 में अगर वैसी हुई है या किसी अजीज को हुई है तो उसको वही दे दे, ठीक है जी। और मैंने ये देखा है कि जब भी डॉक्टर के पास गए उसने कोई नई चीज दी है, उसने कहा नहीं नहीं अब ये जो छोड़े छोड़े क्या बातें कर रहे हैं, अब तो ये नई आ गई है, और वाकई वो नई आई होती है। तो मकसद मेरा ये है कि जो जर्नलिस्ट है ना, उसका जो उसके ज़हन में है, अकल के मुताबिक है, उस पर रखता है, उसे तो चीजों को पता नहीं है, प्रोफेशनल है नहीं है, सेक्टर का भी उसे नहीं पता, वो फिर मार खा जाता कितना भी अच्छा हो। अगर मैं अच्छा हूं तो वो भी अच्छे हैं, बुरे तो नहीं है, सिर्फ फर्क ये है। हाँ हाँ, तो वो नहीं कर रहा है। यही पाकिस्तान का सानिया जो है ना जी वो है ही, इसलिए देयर इज ओनली वन रेजोल्यूशन, वन पॉइंट प्लीज। नहीं, इसका कुछ नहीं, इट इज अ नेशनल ड्यूटी। ये है ही नेशनल ड्यूटी ना, ये तो नेशनल ड्यूटी है। जब आप चेक करते हैं 3% और इस तरह से ये जो नहीं नहीं, कोई चीज नहीं है। हाँ, कोई चीज नहीं है। ये जब वो बैंक को दिया जाता है, बैंक लेता है, क्योंकि बैंक जो है वो प्राइवेट इदारा है, वो कहता है हम करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए वो पर बिल लेते हैं। जी जी, किनको जी? नहीं, बिल डिस्ट्रीब्यूटर तो एम्प्लॉई है।
जी, तो वो आउटसोर्स, जो भी आउटसोर्स होगा उसे पे करना पड़ेगा। ये एम्प्लॉइज हैं। नहीं नहीं, आप देखें देखें, थोड़ी सी मैं बात सुनो। दिस इज अ डिसीजन बाय द ओनर। ओनर इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइडेड ये टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एफबीआर लेना है, यू विल गेट नो कलेक्शन चार्जेस, पीरियड। किसको जी? सर, उनके पास एबिलिटी नहीं है ना, आपके पास पावर्स टू डिस्कनेक्ट है। पोस्ट ऑफिस तो डाकिया क्या कहेगा, गालियां दे के जा सकता है, इससे बढ़ के तो कोई चीज नहीं। देखें, मैं थोड़ा सा अर्ज करूं, वो मीटर जब चाहे आपको वापस दे दे। वो देखें, मेरी बात सुने, वो इसलिए ले जाते हैं कि एक जमाना था जब ये नेपरा नहीं था, उस वक्त आप एक चीज साइन करते थे कि ये जितना सिस्टम लग रहा है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस आपने करनी है, इसकी रिस्पांसिबिलिटी आपकी है, नतीजतन ये आपका हो गया। तो जब डिस्कनेक्ट होता था तो वो खेड़ के ले जाया जाता। अब जब से नेपरा आया है, नेपरा ने अपना कस्टमर सर्विसेज मैनुअल या कंज्यूमर सर्विसेज मैनुअल बनवाया है। उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो सिस्टम है स्पेशली इसके लिए, ये कंज्यूमर ने पे किया, ये कंज्यूमर का, अगर इसे कुछ होगा इसे रिप्लेस भी उसी ने करना है, नतीजतन ये आपका नहीं है। जब आपका नहीं है तो अगर वो क्लेम करे कि मैं आपका कनेक्शन, मैं तो आपका रहा ही नहीं कंज्यूमर, आपने काट लिया, मेरी चीजें वापस करें, वो वापस मिल जाए। ये जी, देखें, पाकिस्तान में बराबरी का प्रिंसिपल, बुराई भी बराबरी की। जी जी, उन्होंने ये गवर्नमेंट को जब कहा कि आप नॉमिनेशन करें, गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट ने बेहतर समझा कि ये पॉलिटिकल लोग होने चाहिए। जी नहीं, वो आप देख लें ना, सिंगर की नहीं है बात, बात की असल में ये थी, ये मुल्तान से चल, मुल्तान से, नहीं नहीं, वो शायर तो नहीं, वो शायर मेरा स्टूडेंट है, ही इज माय स्टूडेंट बाय द वे, चाहे वो मैं उनका स्टूडेंट लगता हूँ। वो मुल्तान में बिजनेस स्कूल जब बना मुल्तान यूनिवर्सिटी का, तो ये पहले और दूसरे बैच के। आप खालिद मसूद की बात कर रहे हैं ना, वो तो बहुत अच्छे हैं, ही एमबीए हैं, बिजनेसमैन हैं, वही ठीक। और इस तरह हुआ था कि इन्होंने बोर्ड्स चेंज होते रहे, तो बोर्ड्स में इन्होंने ये कहा कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। सो एक ये हो गया। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि अब उसमें ह्यूमैनिटीज में से भी लोग होंगे। तो वो मुल्तान में सुरैया मुल्तानी कर साहिबा की बेटी थी, हु वाज अ टीचर, वो लेक्चरर थी गर्ल्स कॉलेज में, अंग्रेजी पढ़ाती थी। तो उन्हें जो है ना, राहत उनका नाम है, बड़ी अच्छी सिंगर है, उन्हें ले लिया था बोर्ड पे। तो वो शोगल खूब चलता था कि भाई ये सिंगर है, सिंगर। दे फॉरगॉट कि सिंगर नहीं, वो जेंडर की रिप्रेजेंटेशन और एज एन एजुकेशनिस्ट है। लेकिन सबके लिए तो वो यही था, अच्छी खातून। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खैर कंट्रीब्यूट तो कुछ ना किया, वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि वैसी बात नहीं है। तो बात असल में ये है जी कि जो बादशाह है ना, वो जो बादशाह को ये याद रखना है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, इतनी सी बात। ठीक है जी। बादशाहत के बारे में थोड़ा सा अर्ज करूं, वाकया है कि उमर फारूक के जमाने में शूरा बैठी कि अगर खलीफा वक्त को कुछ हो जाए तो सक्सेशन क्या हो, सक्सेशन प्लानिंग उन्होंने सोची, जो हमारे किसी इदारे में नहीं है। ठीक है, इधर पता ही कोई नहीं है कि अगर वो सीईओ चेंज हो जाए तो फिर लोग भाग पड़ते हैं अपने अपने पर्स उठा के कि भाई किसने लगना है। ओ सॉरी, वो पर्स ही कहते हैं अंग्रेजी में, बोरी को भी पर्स ही कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, बोरियां। अच्छा अच्छा, उस पे हुआ ये कि उन्हें कहा गया कि ठीक है, इस पर गौर करें। शूरा ने गौर किया, या उस कमेटी ने या उस ग्रुप ने करके, वो गए खलीफा वक्त के पास, तो उन्होंने ये कहा कि जी हम नतीजे पे पहुंच गए। तो उन्होंने कहा किसको आप नामजद कर रहे हैं कि अगर कुछ हो जाए तो वो टेक ओवर करेगा? तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन,
जो खलीफा वक्त के बेटे थे, इन हिज ओन रिकॉर्ड वो आलिम थे, बड़े आलिम थे। तो इस पे हिस्ट्री ये बताती है कि उमर फारूक बरहम हो गए। लफ्ज गुस्सा इज समथिंग एल्स, बरहम इज एक्सैस्परेशन, हाइट है, गुस्सा भी है, गम भी है और परेशानी भी है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्या ये मुफलिसी जो है वो सिर्फ उमर और उसके खानदान के लिए रह गई? ये मुफलिस, ठीक है, किसी को यहाँ पता नहीं, वो ये समझते हैं ये मुफलिसी नहीं है, ये बादशाह, बादशाह तो है ही नहीं, मतलब वैसे ही नहीं है। और फिर अगर मुसलमान अपने आप को कहते हैं तो इसमें देयर इज नो सच थिंग एज मोनार्क, एब्सोल्यूट तो कोई भी नहीं है, खलीफा वक्त है। क्वेश्चन उसे किया गया कि ये कुर्ता कहाँ से आया, सबको पता है, वो कोई ऐसी बातें नहीं है कि जो मैं सुना रहा हूँ, ये तो इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो 1 पॉइंट सर, रेजोल्यूशन, प्रोफेशनलिज्म के नॉन प्रोफेशनल्स को निकालें, इसकी दूसरा आपने करना है पॉलिसी को बेहतर करें। जी कहाँ से निकालें? जी 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 जी। और वो आप बताइए, आसान सा काम है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, कल जो है ना जी, वो मुझसे किसी ने पूछा कि यार बोर्ड में अगर बंदे लगाने हमें तो बंदे नहीं मिलते। मैं कहा, यार अभी अभी आपको बता देते हैं। तो इन 5 मिनट्स व्हाइल आई वाज रिटर्निंग बैक फ्रॉम इस्लामाबाद, मैंने 10 आदमियों के नाम दिए कि ये टॉप क्लास, एक से एक बढ़ के। देखें देखें, शुनीद है कि कुछ लोग इनमें से रिप्लेस होंगे, शायद बोर्ड चेंज नहीं, शायद है सारा कुछ ना, लेकिन जिस किस्म के ये इसी किस्म के बैठे हुए हैं बाहर लगने के लिए, लाइन में लगेंगे। तो इसलिए दुआ ये होनी चाहिए कि काम के लोग आ जाए। ये सर जो मर्जी आप कह दें, ये बंदे पे डिपेंड करता है। और जब अल्लाह ताला को हमारी अच्छाई, यानी कि हम चाहता होगा कि खैर हो, तो बस ये खुद ब खुद ही हो जाएगा, हमने तो करना नहीं, ये डिवाइन इंटरवेंशन से। देखिए सर, मैं तो पहले दिन से मैं सपोर्टर हूँ मैं सपोर्टर हूँ इस बात पे कि कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता पाकिस्तान, अमेरिका नहीं है। यूटिलिटीज खास तौर पे वासा प्राइवेटाइज नहीं हो सकता, वाटर एंड सैनिटरी, ठीक है जी। इसी तरह बिजली जो है वो प्राइवेटाइज के इलेक्ट्रिक की हुई है, तो कोई आम आदमी खुश नहीं है, ठीक है। ये एक सर्विस है, ये थर्ड वर्ल्ड में अभी तक भी थर्ड वर्ल्ड है, ये अगर गवर्नमेंट में रहे तो ये ठीक है। लेकिन अब इसमें मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि जब गवर्नमेंट में रहता है तो इसमें बहुत ज्यादा जो है इंटरवेंशन होती है। या तो अब ली को लेके आए, आप जिंदा करें उसे, सिंगापुर वाले को, ठीक है ना जी, वो आए और 5 मिनट में वो दुरुस्त कर दे सबको, ठीक है ना। वो अभी पिछले दिन उन्होंने अपना एक लीडिंग मिनिस्टर पकड़ लिया। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये जो पावर हाउसेज है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट अपना बजट में से हर साल 100 अरब 200 अरब 500 अरब निकाले और वो पावर जनरेशन के लिए रखे। नतीजतन उसकी कॉस्ट लोगों को वापस ना देनी पड़ी, वो संक कॉस्ट हो। ये जो तरबेला मंगला की आप बातें करते हैं, टके पैसे की बिजली की, जो टका पैसा नहीं अभी 3.5 रुपए की है, वो इसलिए सस्ते हैं क्योंकि उसकी जो लागत है वो संक कॉस्ट है। हुकूमत ने पैसे दिए, वो आप लोगों ने उसे वापस नहीं किए, वो वहां सिंक हो गया। अब उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट वापस नहीं जाए। दयामिर खाशा का 2009 में जिस वक्त उसका मैंने करवाया उसका PC1 अप्रूव, राइट, ECC से, तो उस वक्त उसकी जो कॉस्ट थी उसकी बस बार, ये नहीं कि यहाँ लाहौर में, वो 8 रुपए और 60 पैसे थी 2009 में। आज जो दयामिर भाषा की कीमत है वो 17 रुपए से कम नहीं है, इसलिए कि उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट है। तो मैं पहले दिन से प्रोपोनेंट हूं कि जनरेशन जो है इसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो गवर्नमेंट का हो और प्राइवेट सेक्टर उससे कम्पीट कर ले, उन्हें भी आप चला लें। और बाकी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी प्राइवेटाइज ना करें, उसके मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दें।
कसीम कुरैशी साहब को दें, ये देख चला के दिखाएंगे आपको कैसे नहीं चलती, उसमें है क्या। पावर्स टू डिस्कनेक्ट हाथ में हो, आप कहीं चलती नहीं है। ठीक है ना, आप ही के बंदे चोरी कर रहे हैं या असिस्ट कर रहे हैं या सोए में, पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए हर मुल्क की जो है ना जी, जैसे हर शख्स है कि उसे एक को चाय चाहिए, एक को ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है, एक को कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह हर मुल्क जो है उसकी अपनी कंडीशनैलिटी है। सो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि जनरेशन खास तौर पे जो है ये इसमें असिस्टेंस जो है वो पब्लिक सेक्टर की होनी चाहिए ताकि उसको कंट्रोल रखे। और अब हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा वरना जिंदा नहीं रह सकते। जी जी हमारा एक्सपीरियंस जो है ना वो जो प्रोफेशन का था वो अच्छा था। people are not happy with the तो लोगों के साथ I feel जो उससे पहले लोग समझ जाएंगे। सर हम तो देखें ना, मुझे तो क्लाइंट समझे ना, मेरा तो एक्सपीरियंस टीएनटी का सिर्फ ये है कि आई वाज सिलेक्टेड फॉर इट इन 1974 अर्ली along with a few friends। वो उधर चले गए, मैं नहीं गया, मैं वापडा में आ गया, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ टीएनटी डिपार्टमेंट का। इट हैड बैड सर्विस, मानना पड़ेगा, इट हैड नो गुड सर्विस। टेलीफोन जो है ना लेना जो ये शीर से कम नहीं था। एमएनएस के पास 4 टेलीफोन्स का कोटा होता था, उनकी मेहनत करते थे या लोगों को पैसे देते थे तब होता था। लेकिन इट इज नॉट द टीएनटी दैट इज द मेन प्रॉब्लम, इट इज नॉट द बीटीसीएल। इशू ये है कि टेलीकॉम में टेक्नोलॉजी नहीं है, वायरलेस है, वरना टेलीग्राफ की लाइनें जो है ना टूटी रहती है। आपको पता है मील हाँ मील जंगल के अंदर। और वो अगर वो पहले उन्होंने अपनी टीम सीख रहा और अब आजकल जो है वो और भी काम हो रहा है, काफी बड़े शहरों में भी हो रहा है, वो फाइबर टू होम। जी जी नहीं लगा दिया है, लगा दिया है। वो जो फ्लैश फ्लैश फाइबर है सर, 2 अरब की उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके लगा दिया। देखें मैं जी जी थोड़ा सा मैं भाई साहब मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूं, इसका आंसर टेक्नोलॉजी है। जब बात की जाती है ना कि ये सेलुलर फोन्स आ गए हैं, इनके तो सगला डेट नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कहा जिस दिन हमारे पास जिसे वायरलेस पावर आ जाएगी यहाँ भी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगी। अगर न्यूजीलैंड में पहला उन्होंने 100 मेगावाट जो है माइक्रोवेव के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया तो यहाँ भी आ जाएगी, बड़ी जल्दी आ जाएगी। रेजोल्यूशन की बात हुई है, क्योंकि से उम्मीद है हम उसको पूछ लेते हैं कि रेजोल्यूशन में जो आपने रिलीज किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी और पावर डिवीजन में भी एक्सपर्ट्स की पोस्टिंग की है, बस नंबर 1। नंबर 2, आईपीपीज के हवाले से जो मोहम्मद अली रिपोर्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन की तो मोहम्मद अली करेगा और बिल्कुल छोड़ देना। हमने ये रेजोल्यूशन कि मोहम्मद अली रिपोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंसिडर तो किया जाए। जी ठीक 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 है नहीं उसका नाम ही मोहम्मद अली है। नहीं आप अल्लाह देता रिपोर्ट तो नहीं कह सकते। सर बंदे ने को कहा कि भाई ये अफगानिस्तान जो है ना ये इतना बंदा जा रहा है इतनी चीनी वो इनका ही वजीर था नहीं आप उसे नहीं उसका नाम तो खैर मोहम्मद अली रिपोर्ट नहीं है, हम उसे कहते हैं उसका जो रिपोर्ट ऑन आईपीपीज है ना ऑफ 2020 उसको वो टाइटल दे दें, ठीक है क्या वो दे के ये किया जाए कि उसको कंसिडर किया जाए फॉर इम्प्लीमेंटेशन। बड़ा प्यारे लफ्ज है कंसिडर। आप सबकी बहुत मेहरबानी है, थैंक यू वेरी मच। और मैं
मैं उनको एक्स नहीं कहता, एक्स माइंड कर दें, ये हमारे प्रेसिडेंट है, अब भी प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट तो कराची में बैठे हैं, यहाँ लाहौर के प्रेसिडेंट हमारे यही है। तो डॉक्टर जो यूनुस साहब कंक्लूडिंग रिमार्क कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही सबको, सुनाई दे रहा है? अच्छा, अभी कोई कसर रह गई थी that I have been called. We have vote of thanks. नहीं, conclusion कह रहे हैं। I've been asked for conclusion. Vote of thanks is a part of it. So we have listened to Cheema Saab, a horse's mouth, and there are some things which I have understood, and there are some things which I have not understood. One thing alarming he's talked about is a threat, existential threat. Today we are up with an existential threat. So shall we just sit back and wait for the disaster to come, or shall we do anything about it? That is the question. Now, Mia Saab has proposed that we have a recommendation of what has transpired today, and we write to the government that this is what we asked for. As I have understood, we have asked for professionals to be there at the helm of the affairs as far as power production and its distribution is concerned. And second thing, he has referred to Muhammad Ali report. Fine, the House has agreed to it. So there will be a recommendation, there will be a writing, and it will go to the government. But will there be any effect? Will there be any? Will there be anybody who will have a note of it, or will there be any action? We don't know. But still, it's worth writing and saying something rather than keeping quiet. Now, I personally see Cheema Saab has really exposed the potentials and the barriers and the weak points and the strengths of the whole system. And as we see, things are bleak. Things are not very, unfortunately, things are very bleak. We don't have to, we have many horizons to act upon. We have, in fact, a multifarious situation. Now, at the forum of Institution of Engineers Pakistan, what should engineers do? That is the question. What should we do? That is the question. One thing I have been thinking before as well, and I think here, Cheema Saab talks of professionals. Now let me see what kind of professionals we are talking of. Engineers. Now we are assuming that engineers are the perfect people, but we know that engineers are far from perfection. Not only technology-wise, not only expertise-wise, but also diligence. There is a shortage of diligence. We are professionals, we know our problems, we know our weaknesses. So, before recommending any professionals to these positions, we have a task to train our professionals, train people on two planes. One is professional expertise, and the other is morality, conduct, and integrity of people. And we know
that there is a lack of integrity among ourselves. When pressure comes, I've seen engineers collapsing. I've seen people collapsing when the pressure comes upon them. So there has to be boldness, integrity, and ability to stand all kinds of pressures. So we need to train those people. Not only train those people, but we need to regulate them. So we are really thinking of something like a corporate power professional, registered corporate power professional. So this is the platform. I think our institution of engineers has a platform where we can train people technologically and also morally, so that we can recommend them to the positions that Cheema Saab is referring to. I think this is, if we are able to do this kind of job, I think this will be a very good job done by the institution of engineers Pakistan. And we are sitting here. This is a center of innovation and entrepreneurship. This center was in fact created for the purpose of imparting entrepreneurship to the professionals and imparting technologically capacity building of those professionals. In fact, this was the start point. And luckily, we have asked Cheema Saab to be here, and I will request Cheema Saab to be associated with the Institution of Engineers to this effort, and let's help ourselves. Let us bring up a battery of engineers who are brave, who are strong, whose integrity is doubtless, and who are professionally, technologically at par with anybody in the world. So this is our first job. So I think this is what we are. This is the start point. So इसके बाद चाय वाय है? Yeah, everything ends up on chai. मैंने तो कंटिन्यू करना था. मैं कभी भी कर सकता हूँ. I can talk a lot. अभी तो चाय है. I was the other day I telephoned Cheema Saab. He was in Islamabad, and I requested him to come here and talk to us. Then recently, very recently, day before yesterday, I talked to Dr. Mubarak Mand, Sabar Mubarak Mand, and I wanted to have a grasp of what he is doing, what he is talking about, this thar coal and the potential of energy from thar coal, and the difficulties which he has been going through. So he had a similar narration. I talked to him about 1 hour or so, and he had something very similar. Desperation in his words. So we are all desperate. We all see the things are not going well. We all see, we are all worried. But well, let's not lose hope, because if we lose hope, then we lose everything. If all the doors appear closed, we want to find out which is the way which is still open. And there is always a door open. So let us start with something serious in this institution of engineers, Pakistan. Train people, train professionals, technologically and energetically. Let's make them bold people. And Cheema Saab kindly join us, participate with us, and inshallah. So that's it. Thank you.
नहीं आप सर्टिफिकेट का आई थी आपका लेकर Thank you.